हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। मिलते हैं वापस आज फॉर अनदर सेशन ऑफ इंटीग्रेशन। टुडे आई एम गोइंग टू टेक property of odd and even functions for definite integrals. Property of odd and even functions for definite integrals. अब ये odd और even function क्या है? Just observe here. Supposing you are given an integral like this, minus a to plus a fx dx. Okay? If the function is odd, डायरेक्टली आंसर 0 हो जाएगा. वी आर लकी एट दैट टाइम, नो नीड टू कैलकुलेट. बट इफ द फंक्शन इज इवन, देन द आंसर इज नॉट 0. इट गेट्स कन्वर्टेड टू दिस 2 times 0 to a fx dx. Then we are not so lucky. You have to solve the integral. But how do you check whether fx is odd or even? That is important. Okay, that I'll explain while we are taking the problem. अभी प्रॉब्लम जो दिया है इसमें कॉम्बिनेशन है. बोथ इंटीग्रल्स आर इंक्लूडेड. एक सब में दोनों आ गए, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन. लेट अस सी हाउ. यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल -π/4 to +π/4 x + π/4 upon 2 - cos 2x. ये सॉल्व करना है. तो पहली चीज रिकॉग्नाइज कैसे करनी है. If you get -a to +a, -π/4 to +π/4, -5 to +5, -2 प्लस लिमिट्स आ गए, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन यूज करनी है. ओके, तो टू यूज दैट प्रॉपर्टी, दिस इंटीग्रल will have to be separated in two integrals, not all integrals. ये सब में. Okay, so why? Because in the numerator you have got two terms. So I'll write this as x upon 2 - cos 2x. First integral. Second integral, π/4 upon 2 - cos 2x. Second integral. So x goes along with this, π/4 goes along with this. Just separate out the two integrals, right? Because substitution is not possible. Cos 2x substitution नहीं कर सकते. Sign is not present. Function and derivative are not present over there, so this has to be solved by separating out the integrals, right? So we have separated out the integrals. First integral we have called as I1. Second integral I am calling it as I2. Now let us check for I1 first. So I1 यहाँ पे लिख लिया है. Again -π/4 to +π/4. -a to +a means you have to check whether the function is odd or even. ये चेक करना है. So what is the function? ये जो इंटीग्रल के सामने है, that is called as the function, which I have written over here. fx equal to x upon 2 - cos 2x. ये फंक्शन है. अब ये odd है क्या even है? कैसा चेक करना है? There is a method to check for odd or even function. Replace x by -x. तो जहां पे x है वहां पे -x सब्स्टिट्यूट करो. सो f ऑफ -x, x के जगह -x, x के जगह -x यहाँ पे भी आ गया. सो 2 × -x gives you -2x. ओके, बट रिमेंबर दैट फॉर्मूला विच यू ऑलरेडी नो. cos of -θ is cos θ. You have to ignore this minus sign for cos. If it was sin over here, साइन ऑफ -θ के लिए माइनस साइन आगे आएगी, लेकिन कॉस के लिए जस्ट इग्नोर द माइनस साइन. ओके, सो माइनस साइन गेट्स इग्नोर्ड, यू जस्ट गेट cos 2x. तो क्या किया चेक करने के लिए? राइट fx फर्स्ट, रिप्लेस x by -x, x by -x, x by -x, but -2x gets converted into 2x because of cos. Now observe, minus of x upon 2 - cos 2x means what? ये जो fx है यहाँ पे, x upon 2 - cos 2x, that has been repeated over here. See, minus of x upon 2 - cos 2x, ये repeat हो गया. That is minus fx. Okay, so after replacing x by -x, sometimes you get f of -x equal to minus of fx.
So if you get f of minus x equal to minus of fx, then the function is odd. And if the function is odd, answer for that integral is 0. I1 equal to 0. So I1 का आंसर मिल गया है 0. प्लस अभी I2 के लिए देखना है. So let us see for I2. I2 is this part. Again for I2 you have got minus pi by 4 to plus pi by 4. Minus a to plus a means property of odd and even functions. So let us check again whether the function is odd or even. फंक्शन यानी इंटीग्रल के अंदर जो है वो फंक्शन है pi by 4 upon 2 minus cos 2x. This is the function fx. कैसे चेक करते हैं ऑड और इवन के लिए क्या करते हैं? रिप्लेस x by minus x. f of minus x. Pi by 4 remains as it is. 2 minus cos of minus 2x. बराबर? x के जगह minus x डाल तो minus 2x आ गया. Again, cos of minus theta, you have to ignore this minus sign. When you ignore that minus sign, you get cos 2x. So finally, what do you get? Pi by 4 upon 2 minus cos 2x. यानी ये repeat हो गया, देखो. Repeat हो गया, but without the minus sign in front. Minus sign नहीं है सामने. So what do you get? f of minus x equal to fx. ये fx यहाँ पे आ गया. fx यहाँ पे आ गया. I have written it over here. So this function is repeated without the minus sign in front. So what have we got? F of minus x equal to fx. So if f of minus x equal to fx, then the function is even. And when the function is even, we have to solve the integral by using this formula. क्या होता है फंक्शन में फिर इंटीग्रल में 2 times 0 to a fx dx. That is what we get. And you have to solve now. So these are two problems in one. एक में odd दिया है, एक में even दिया है. So sometimes a problem like this can also come. But in most cases either it is odd or even. If you are lucky you will get odd. If you are not so lucky, you have to solve the integral. So notebook लेके आओ, solve करेंगे I2. I'm going to solve I2. Here integral. Let us solve. Please bring a notebook because that solving I2 is also important in this case. I1 तो 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अभी देखो I2 सॉल्व करते समय क्या लिखने वाला हूं मैं. I2 के लिए क्या आ गया? I2 के लिए रूल सेज 0 to a में कन्वर्ट हो जाता है. minus pi by 4 निकल जाए. somewhat simpler, it becomes somewhat simpler, but you have to solve it. So instead of minus 4, it becomes 0, but outside you have to take 2, because now we have decided that fx is even function है, यानी ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है. सो लेट अस सॉल्व. चलो स्टार्ट करो. I2 इक्वल टू 2 बाहर है. इसमें चेंज क्या है? माइनस पाई बाय 4 नहीं है, 0 to पाई बाय 4, 0 to a. ओके, I2 लिख लिया. Now you have to solve this. पाई बाय 4 कांस्टेंट बाहर ले लो. टू इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 2.
Okay. So what we get is करेक्ट. अभी ये कौन सा टाइप है? 3-4 weeks बैक मैंने इनविजिबल टर्म सब्स्टिट्यूशन लिया था, इन विच आई हैड टोल्ड इफ यू गेट 5 plus cos x, 5 minus cos x, 3 plus 2 cos x, a plus b cos x, then it is invisible term substitution type. Okay. वहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या था? Let tan x by 2 equal to t, where tan x by 2 was the invisible term. Same thing over here, but the difference is instead of x you have got 2x. तो x के जगह 2x अगर है and it is of the type a plus cos x, b plus sin x, then again invisible term substitution, but here there is a slight change. If the angle is 2x, then our substitution is let tan x equal to t, not tan x by 2, let tan x equal to t. That is the difference. Okay. X का sum मैंने पहले लिया था. Now it is 2x. So since tan x is not present here, it is called as invisible term substitution. Okay. So tan x equal to t. इसके बाद क्या? Therefore x equal to tan inverse t. So differentiate with respect to t. Derivative of x with respect to t is dx by dt. Tan inverse t derivative 1 upon 1 plus t squared. ऊपर ले लो. Okay, dx equal to dt upon 1 plus t squared. Clear? In the other type, where x was present, we used to get dx is equal to 2 dt upon 1 plus t squared. Here we just get dt upon 1 plus t squared, right? बाकी फॉर्मूले सेम है. cos 2x के लिए 1 minus t squared upon 1 plus t squared, sin 2x के लिए 2t upon 1 plus t squared, same formula to be used. ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हो गए. Now one important thing. बोलो क्या इंपॉर्टेंट थिंग है? डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन करने के बाद? यू हैव टू चेंज द अपर एंड लोअर लिमिट्स. अपर एंड लोअर लिमिट चेंज करना है. तो कैसे चेंज करेंगे? पहले न्यू अपर लिमिट फाइंड आउट करिए. So for new upper limit, what is our original substitution? Tan x equal to t. Original upper limit is pi by 4. Put x equal to pi by 4. So t equal to tan pi by 4. Put x equal to pi by 4, t is tan pi by 4 and at tan 45. Tan 45 is 1. So t equal to 1 is our new upper limit. Now new lower limit. Equation is same. Tan x equal to t consider कर दिया. Lower limit के लिए original lower limit 0 है. Put x equal to 0. यहाँ पे that is how you transform the limits. Put x equal to 0, tan 0 equal to t. Tan 0 is 0, so t equal to 0. So changing the upper and lower limits is a must for definite integrals after making the substitution. Okay? तो ये दोनों लिमिट्स चेंज हो गए. 0 आ गए, 0 remains 0 here.
here you get 1, right? So I will make the substitutions now. So what do I get? I2 equal to जीरो टू 1 आ गया. dx के लिए dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. cos 2x के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. Do not cancel 1 plus t squared. यहाँ पे cancel नहीं होएगा. You have to find the LCM then cancel. Okay. So let us solve this further now. चालू करो. Go ahead. क्या लिखा है? एलसीएम लिया, फाइंड आउट किया. Usual method of finding the LCM. After finding the LCM, cancel कर दो LCM. ब्रैकेट्स ओपन करो. ब्रैकेट्स ओपन अप करो. टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर. 2 minus 1 is 1. This is what we get. चेक कर लो. ये सॉल्व करना है अभी. ये कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल. हाँ, बाहर पाई बाय 2 है. So how do you solve this? In any quadratic term, coefficient of t squared should not be there. It should be made 1. Okay? So x squared या t squared कुछ भी रहेगा, उसको ब्रैकेट के बाहर लेना है. थ्री को ब्रैकेट के बाहर लिया तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/3. When you take a constant outside, inside the bracket we divided by 3. 3 बाहर लिया तो आप अंदर 1/3 आ गया. And 3 goes from here. Then what do you do? 3 को इसके साथ बाहर ले लो. Outside the integral in the denominator. Then what do we do? 3 बाहर लेने के बाद ये जो 1/3 that should also be expressed as a square. In order to use one formula. Do you remember which formula? Compare करेंगे. dx upon x squared plus a squared. This is our x.
This is our A. So dx upon x squared plus a squared is nothing but 1 upon A tan inverse x upon A. ये फॉर्मूला है. So in order to get a square over here, यहाँ पे perfect square लेना जरूरी है. Now just let us use the formula and get the answer. चलो complete करो. 3 into 2 is 6. Now see, formula में क्या है? One upon A. One upon 1 by root 3. Tan inverse x upon A. X is t. A is 1 by root 3. But don't forget, you have upper and lower limits 0 to 1. अपर एंड लोअर लिमिट्स है, तो यहाँ पे t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट नहीं करनी है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एज वी डू. चलो कंप्लीट करते हैं अभी. न्यूमरेटर इंटू पाई बाय 6 इंटू वन इंटू 1 बाय रूट 3 ऊपर लेते हैं, रूट 3 बाय 1. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपर एंड लोअर लिमिट्स? जहां पे t है वहां पे अपर लिमिट माइनस जहां पे t है वहां पे लोअर लिमिट. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो फर्स्ट पुट t इक्वल टू 1. देखो, पुट t इक्वल टू 1. 1 अपॉन 1 बाय रूट 3 minus tan inverse lower limit. When you put t equal to 0, everything gets converted into 0. That's why I have written tan inverse 0. Now 1 into 1 by root 3 का मीनिंग क्या है? It becomes like this. See, 1 into root 3 by 1. ये ऊपर गया. 1 into root 3 goes up. Tan inverse 0 is 0. So your answer is pi by 6 into root 3. tan inverse root 3 सोच लो कितना है. tan inverse tan of which angle is root 3? tan 60 is root 3, right? tan 60 is root 3 means tan inverse root 3 will be equal to 60 degrees. 60 degrees यानी कितना है? pi by 3. So pi into pi squared root 3. 6 into 3, 18. That is the value of I2. You can also rationalize this if you want. Let me check the answer given.
Okay, they have rationalized this. तो rationalize कैसे करेंगे? See, even if you keep the answer this way, it won't be given wrong. Okay, because in most sums usually root sign is allowed in the numerator. No need to rationalize. Okay, but since they have written in the book the other way around, let us rationalize and check क्या आता है. Rationalize the numerator. Multiply and divide by root 3. Root 3 into root 3 is 3. 18 root 3. So 3 6 are 18. Pi squared upon 6 root 3 is the answer. Final answer. As I said, both the answers are correct. ये rationalize करने के बाद ये आता है. I1 का आंसर तो 0 ही है, because it was a odd function. I2 का आंसर ये है. Okay. So this is how you use property of odd and even functions as we have seen today. Right? सिर्फ चेक करना है फंक्शन odd है या even है. Odd आ गया तो straight away 0 लिखना है. Even आ गया तो you have to solve it. You know how to check for odd and even functions. Replace x by minus x और check करो. If f of minus x equal to minus fx, the function is odd. That answer is 0. If f of minus x equal to fx, the function is even. Then you have to solve. Okay. So that will be all for today. Revise karo. Both the properties are taken in one sum. So that, and this invisible term substitution is also there. You will be able to revise that also. वापस लिख लो, try करो. Okay. So that will be all for today. Good day. Bye.